It's hard to build a business like us also. We are not a product that consumers will flaunt. Right? You're in the apparel world or in the where most like you will flaunt a soul store, like there's clear design language and all of that. You're creating the design language, but it's a very personal product and it's like hidden inside, right? For the most part. So you're building something which is very personal in nature in an industry that is probably has purchasing once in a year mindsets that are kind of very, very defined by this. Right. So what's your market like? And I think you have boss, I'll tell you, the incumbent is like a world-class company. Is like a world-class company. that is the reason I chose and why I think Innerwear is the best category. You can disagree, but I think it's the best category because break that because of the reasons that you said. कि कोई सोचता नहीं, मतलब एक बार अगर उसको acquire करके like you've wowed the customer, वो कभी और switch भी नहीं करेगा. So underwear, if someone's happy, it's like they will not switch. It is an automatic process कि हर साल 6 आती रहेगी, हर साल 8 आती रहेगी. ट्रैवल कर रहे हैं तो 3 नहीं आ गई. It's क्विक कॉमर्स के लिए perfect category है. Because of this low consideration is what you mean. It lends itself really well to be built at scale क्योंकि लोगों को choices भी ज़्यादा नहीं चाहिए. लोगों को मतलब most of the underwear sales happen in 5 colors. 5 color में category खत्म. Now imagine last year. You're talking men. Men. I'm only talking men. So last year we sold. You will guess करो हमने कितनी अंडरवेयर बेची होगी? 90 लाख अंडरवेयर बेची हमने लास्ट. क्या बात कर रहे हो? मेरे को भी बिलीव नहीं हो रहा था जब नंबर मार्च खत्म किया ना. That's wild यार. अगर ये धंधा अच्छे से एफिशिएंटली स्केल कर दिया तो फॉर ऑल इट्स वीकनेस, तो फॉर ऑल द वीकनेसेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, इट्स डैम टफ यार. एडवर्टाइज ही नहीं कर पाते, मतलब अभी तो फिर भी ठीक है. सो माय बिजनेस अनलाइक वेदांग्स हैज बीन बिल्ट ऑन परफॉर्मेंस मार्केटिंग. Men don't like to look at मतलब other men on Instagram in underwear. So direct product तो दे ही नहीं सकता. इतना लो consideration है कि कोई vested interest ही नहीं है. किसको जाना जो है सही है. So for me, how much ever brand building exercise I would try digitally, उतना इंटेंट ही नहीं है अपना. दिस कैटेगरी लाइक दिख के कूल लगता है, मतलब ओवरसाइज ट्रेंड है, मतलब इट्स वैनिटी. लोगों को प्रोजेक्ट होता है, इसमें तो प्रोजेक्शन भी नहीं आता. हेंस इट्स अ लो कंसिडरेशन. सो वी बिल्ड ऑन परफॉर्मेंस. देयरफॉर क्रक्स ऑफ इज अ ग्रेट प्रोडक्ट. अगर प्रोडक्ट अच्छा बनाया है तो आप अक्वायर करने में थोड़ा खर्चा करो and eventually you'll get into the flywheel. And now we see that last couple of years we cut marketing every year by 5 to 15%. पहले वाले सालों में 15 कट होती थी. We're still doubling. मतलब my assumption was इतनी marketing हम कर देंगे क्या होगा. The biggest cut we took in marketing that year we almost doubled. अब double नहीं होते, but marketing is reducing every year. Why? Because of repeat. क्योंकि वो flywheel में आ गए. 90 lakh underwear is like what, 10 to 15 lakh customers in the year? That's a lot. पक्का होंगे उतने. एवरेज